Hello guys, welcome to my channel and I hope you all are doing well. May God bless all of us. So you must be thinking today I'm going to talk about what? So in my previous video, um, I think I have completed, I have the spiritual books, then I completed the motivational books. Today I'm going to discuss about the management books of like strategic management of MBA, or even if you're managing yourself. But mostly this video will be a long video because I have bunch of books, and one of the best, those books are the best books you can bet. These are all the MBA books, and I'm going to describe one or two lines on this. So uh, please have a look into these books, and if you want to buy, you can buy it from anywhere. So these are all Harvard Business Review books and books of the renowned authors. Okay, so let me introduce my first. Ah, this one. Okay, now let me just explain one by one. The first and foremost, I would like to tell you that Chanakya Niti, and I I think Indians don't need the introduction of अर्थशास्त्र के जो रचयिता हैं कौटिल्य, और जिन्होंने चाणक्य नीति कंप्लीट लिखा है. I think every MBA student, or any, even if the professors, they should read these books. So let me tell you, when I think my first MBA class was on CIS, Computer Information Systems, because I come from that background. But I was really interested to do it because उसे पढ़ाने में कोई मज़ा नहीं आता है, और वो रोज़ के रोज़ हम लोग वही देखते हैं, पढ़ते हैं, और वो पढ़ाता हूँ मैं आई मीन इंडस्ट्री में जो है मेरे जो कस्टमर्स, द पार्टनर्स, द सिस्टम इंटीग्रेटर्स, द डिस्ट्रीब्यूटर्स, मैं उन्हीं के सामने वही CIT रिलेटेड, जो CIS कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स रिलेटेड सब पढ़ाता हूँ. मेरा जो प्लान था, जो मुझे जो दिल छूता था, वो है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. मार्केटिंग मुझे इसलिए नहीं दिया गया बिकॉज दैट्स अ वेरी the students, most of the students, they like sales and marketing, and I was going to start. So but the marketing professors are different professors, but again from CIS I grabbed the opportunity to teach research methodology, business research, and I'll show you, I mean, different in a different video what kind of book I use to teach that. But the second thing is, after CIS and this class of business research, those students, they requested the college to give me that strategic management class for those students. So before that I had bought all those books when I was doing in the MBA, but again I bought some other books also. So the second book is Corporate Chanakya I have. This is from Mr. Radhakrishnan Pillai. It's all about the management, how to manage your corporate, the corporation, taking this thinking as a Chanakya. So that's all about corporate Chanakya. Now, this is a small book, Management Moment by Moment, by JP Vaswani जी. वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, और लेकिन एक छोटी सी किताब जो है, it's all about
managing yourself. So I'll tell you the topics on this. It's a small book, but stress management, anger management, fear management, health management, time management, people management, soul management. So this was given to me by my younger brother, and as I have told you multiple times that my younger brother is a PhD in civil engineering and also PhD in philosophy, so he always reads this kind of book, so he gave me this one. Then the best book till now for me is Blue Ocean Strategy. This is one of the best management book. Nobody should ignore this book. And by W. Kim and Drini Borghini. So Blue Ocean Strategy is like, it says that how to compete in the market, not through cutting the throats of which is cutting the throats in a market is red ocean. एक वहाँ पर क्या होता है, एक दूसरे के साथ compete करके एक दूसरे का गला काट कर बिजनेस करने के लिए निकलते हैं. लेकिन ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी आपको बताता है कि how to be different from the red ocean, create a market which will demand everything, which make the competition irrelevant. जब आप रेड ओशन स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, उसमें होता क्या है कि आपको सिर्फ यही सिखाया जाता है और आप यही सोचते हैं कि इसको गला काट कर कैसे मार्केट में एंट्री करना है. इसमें उन्होंने बताया है हाउ यू हैव टू मेक द कंपटीशन इररिलेवेंट. सो I'll give an example of what happened to Reliance Jio. So Reliance Jio came to the market, not competing on voice, because there are numerous telecom service providers are there, like Vodafone, Idea, then Bharti Airtel, then Uninor, Telenor, BSN, MTNL, lot of competitors. What Reliance focused and looking towards the future is data. That's the Blue Ocean strategy. So Reliance Jio created an ocean where there is no competitor at all, or making the competition irrelevant. So that's a kind of example I give. So that's Blue Ocean strategy. The latest book from Blue Ocean strategy, even if W. Chan King and Rini are the professors, they have their own institute also. So Blue Ocean Shift, this is the latest book, I think. Blue Ocean Strategy is a very old book. This is 3 to 4 years old book, Blue Ocean Shift. Okay. Now coming next, Jack Welch. So if you've been asked by somebody who is the CEO of 20th century, this person is the CEO of 20th century. Okay. So this is straight from the gut. Extremely good book by Jack. I have another book. I'll show you. I have another book which is Jack's, is this one, Winning. Even if it is a small book, it is extremely a good book from Jack, and you know how he made GE to the top. And next, coming, Michael Porter. Michael Porter, you know who is Michael Porter. So this is competitive strategy. It is as good as management, strategic management, even if marketing, even if sales and marketing, and even if economics also. So competitive strategy, techniques for analyzing industries and competitors. So Michael Porter's book, and Michael Porter's book is Competitive Advantages. One of the best book I've ever read. So creating and sustaining superior performance. I think if you go through multiple channels or social media, Michael Porter
he had visited India also, and he has predicted, and when you know when uh, Mr. Uh, so he had told I'm high on Indian leaders like Indian prime ministers and everything. So Michael Porter is he is again a professor in one of the university. I just forgot. So have it. You should have this book with you. Here is a big and powerful tool, business, the ultimate edition. I think I bought it paying some 3,000 rupees. So ultimate resource, the only guide to business you will ever did. So this a rich treasury of information. This is from HBR, Harvard Business Review, and you can say that this is an encyclopedia of strategic management kind of thing. Okay, so next book is coming, which is by Robert Herbold, Seduced by Success. I've not gone through this book, but I definitely. So, how the best companies survive the 9 traps of winning. Which are those nine traps? Definitely one day I'll do the analysis and let you know. So that's Seduced by Success. One of the big book, you don't believe. So the ex-United States President, Donald Trump. But one thing I learned from this is, if you're passionate about business and life, so think big and kick ass. So what he means to say that think big is fine, but when ये कहते ना जो सन की लोग होते हैं, मुझे सक्सेस होना ही है, मुझे सक्सेस होना ही है, वो जो सन की होते हैं ना, वो उनमें से एक है वो, और ये कभी कभी आदमी को बहुत ऊपर तक ले जाता है. एक सनक होता है जो कहते हैं ना कि I don't find a proper English word for that, but again, he is successful because of his behaviors, and we know during his rule, during his tenure as an American president, so we know what kind of person he was. But yes, आपको अगर बहुत ही सनकी बनकर आगे बढ़ना है, this is one of the good book. Okay, coming up next is beautiful books. Okay, so let me start from this David Strauss, The Magic of Thinking Big. Let me tell you, in last video I was telling that Promote Yourself by Dan Scabell. That was my second book in my life. This is the first book in my life I have bought in the management, and at least this is the new book, but old book I bought it from Footpath. It's more than 20 years earlier. One of the best thing I liked in this book is somebody had asked the question that can I start a different career at the age of 40? So he said, why not? You can. And believe me, I have started a different career in my life at the age of 38. This book was my inspiration. I completely changed my career to information technology, और मैंने जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि इस जगह पर मैं पहुंचूंगा. So what he has given a simple formula is,
If you start working at the age of 25, when you reach at 40, it is just 15 years. And even if people cannot start at the age of 25, 26, 27, it's just 12 to 13 years of your career. But after 40, up to 65, as in Western countries, you have a 25 years of career. So why can't you pursue a different career? Why can't you change it into a different career at the age of 40? That single page touched my heart and soul. And some other day I'll discuss about my success and career in my life, and ups and downs of my career I'll discuss. But that book changed my decision that at this age also I can change my career. From a pure science student, from a different career to an engineering career and information technology, IT. Okay, so magic of thinking big. Then coming, first break all the rules. Marcus Buckingham, first break all the rules. ये किताब है ना, ये ट्रम्प साहब की किताब की जैसे है. ये सिखाता है कि दुनिया में ऐसे कुछ लोग हैं जो कानून से बाहर जाकर बहुत कुछ करते हैं. पहले बोलते हैं कि सारे कानून को तोड़ो, उसके बाद कानून को फिर अपने बनाओ, अपने हिसाब से कॉर्पोरेट को एक बिजनेस एम्पायर को आप बनाओ. So I would say this is very aggressive book, First Break All the Rules, and one of the best aggressive management books. Coming, this is by Ian Macro and Adrian Farham, that High Potential. And it's all about, I've not read this book, but it's all about, manage the people, how to spot, manage and develop talented people at work. So it is good for the managers because, I work as a people's manager. So it's my duty to read all this kind of books. I need to identify all those people in my team so that I can, I can promote them. I can give them some additional responsibility kind of thing. So this is a good book for high potential. Then I have this. I think I should have discussed in the next my marketing one, sales and marketing. But again, मैंने आपको जब दिखा दिया. So you can sell is, and there is another book is You Can Win. So जीत आपकी जो है वो है हिंदी में शिव खड़ा साहब का है. It's a good book. You Can Sell is about a sales head or sales and marketing team head. So I should have discussed this. Again, I'll keep it separate. I'll discuss it. Coming up is, Ken Blanchard, PhD holder. It's a small book, The Heart of a Leader. आप यकीन नहीं करेंगे, ये छोटी छोटी मेरे पास इनके 3 किताबें हैं. The Heart of a Leader, 1 Minute Manager, 1 Minute Salesperson, 1 Minute Apology. These are 3-4 small books I have from Kenneth Blanchard and Spencer Johnson, Larry Wilson. So let me tell you, these books teach us like the 1 Minute Manager. 1 Minute Manager means how you can be a manager in 1 minute. Thinking process and certain rules and regulations. 1 Minute Salesperson, how you can be a salesperson in 1 minute. Again, thinking process and the rules and regulations. 1 Minute Apology. ये तो मुझे याद दिला रहा है कि मेरा जो सेल्स पर्सन था, मैं उसके साथ झगड़ा करता था इसलिए कि I'm a टेक्निकल सेल्स गाय and he's a pure सेल्स गाय. एक हमेशा हमारे बीच में दीवार रहता था
और हम लोग आपस में कभी कभी लड़ाई करते थे। एक बार मैं यहाँ से बैंगलोर जा रहा था और इस किताब को पढ़ते पढ़ते द मोमेंट आई लैंडेड इन बैंगलोर आई जस्ट सेंट हिम एन SMS, आई एम सॉरी बॉस, आई एम सॉरी यार, I should not have behaved with you like this. Or he was coming later in that flight. We have the QBR kind of thing, quick, quarterly business review. और जो 10 दिन की तो चुप्पी और दूरियां थी वो मिट गया उस दिन। ऐसा होता है। सो बहुत ही अच्छी तरह से लिखा गया। इवन इफ एक कहते हैं ना कि ए बॉस या सेक्रेटरी या फिर a boss can apologize to secretary, a sales head can apologize to the sales people, the teams. This is all about. This is all from Spencer Johnson, Kenneth Ken Blanchard, Steven Silbiger, the 10-day MBA. अगर आपको MBA के बारे में जानना है, MBA क्या होता है, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आप ये बुक ज़रूर पढ़िए। कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं MBA में और उसमें आपको स्पेशलाइजेशन किस में करना है, ये सारी चीज़ें इसमें लिखा गया है। सो दिस इज़ अ गुड बुक, मैग्ना पब्लिशिंग एंड बाय स्टीवन सिल्बिगर। सो आई विल रिक्वेस्ट द students who are going to pursue MBA, who are thinking about MBA, they should read this book. Oh, so Devdutt Patnaik, just like I told you, I'll make a video on Dr. Devdutt Patnaik, why I like him and for what reason I have his books in my library. So an Indian approach to wealth success सूत्र, देवदत्त पटनायक। माइथोलॉजी को लेकर इंद्र, वरुण और लक्ष्मी जी से लेकर ये सारी चीज़ें उन्होंने बताया है। जैसे हम कहते हैं ना, हम पूजा करते हैं, व्यापारी लोग और लक्ष्मी जी को पूजा करते हैं, पर लक्ष्मी जी कहाँ हैं? लक्ष्मी जी तो रहते हैं विष्णु जी के पैर, क्षीर सागर में वो विष्णु जी के पैर दबाती रहती हैं, उनके पैर के पास बैठी रहती हैं। सो लक्ष्मी जी को पूजा करने के साथ साथ विष्णु जी की भी पूजा करनी ही चाहिए। और अगर विष्णु जी का पूजा अपने आप कर लिया तो लक्ष्मी जी की पूजा अपने आप हो जाता है। पर नॉर्मली आप क्या देखते हैं, जो दुकानों में लक्ष्मी जी और गणपति जी की फोटो रहती है। सो ये सारी चीज़ें हैं ना, वो इसी में बताते हैं। तो दिस इज गुड बुक एंड स्मॉल बुक ऑल्सो। An Indian approach to learning the talent sutra, how a talented manager can handle his team. It's all about the talent sutra. So that success sutra, this is talent sutra. छोटी सी किताब है लेकिन बहुत अच्छी तरह से, again comparing to the mythology to the in modern management, ये सब उन्होंने दिया है। ठीक है। उस ज़माने में जो राजा महाराजा या फिर इंद्र वरुण से लेकर इवन इफ आपका राम जी या फिर जो राजा बने थे, वो सारी चीज़ें उन्होंने उसको कंपेयर करके वहाँ पर दिए हैं। द नेक्स्ट विच इज द 4-hour work a week. So this is one of the best book I've ever read. कभी कभी होता है ना, हम लोग काम जब करते रहते हैं 24 घंटा भी हमको कम पड़ता है, हम सो नहीं पाते हैं। I can talk about myself when I was traveling to Southeast Asia. I was handling India and Southeast Asia, 2 regions. मुझे सोने के लिए वक्त नहीं मिल रहा था। मीटिंग्स के बाद उनके प्रेजेंटेशन बनाना, फिर मीटिंग्स में क्या डिस्कशन हुई उसको प्रेजेंटेशन बनाना, फिर दूसरे दिन जाके उनको ये करना। लेकिन हमें तो सिर्फ 5 दिन मिलता था, 7 दिन में से 5 दिन में जो फ्राइडे है ऑलमोस्ट कभी कभी जल्दी हो जाता था, 4.5 डे। इन्होंने उसमें लिखा है कि द 4-hour work week, जो एक हफ्ते में ना आप 4 घंटा हर दिन काम करके भी, वो प्रोसेसेस दिया है इसमें, 4 घंटा काम करके भी आप अपनी जो टारगेट पूरा कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं कंपनी को।
कैसे ये this is a must book for all of you. One of the most prominent motivational speakers, Zig Ziglar, born to win, find your success code, born to win. आपको ये किताब में सारे वो सक्सेसफुल सूत्र लिखा गया है, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखा गया है. छोटी सी किताब है, but so he is one of the best motivational speaker. You can listen his audiobooks also available in YouTube. I can give you the link. But yes, Zig Ziglar is it's a must-read book for you. Coming up, Mr. C.K. Prahlad and Gary Hamel. Just guess which book is this? Competing for the Future. Every MBA student, she should read this book, Competing for the Future. It's all about your management, your marketing, your economics. Everything is written in this. I'll make a separate video for the marketing books I have. I have HR books. I have the economic and finance books. I'll make a separate video on that. But C.K. Prahlad, even a professor in US University, and Gary Hamel, also a professor in Management Institute, one of the year's best management books. This one, you should read it. Ulrys. So I have books about Jack Trout and Ulrys on marketing. That I have certain books. I'll show you separately. Focus. Like I showed you, Michael Porter's book. So this is one of the best book I've ever read. Focus. Without focus, focus से मुझे याद आया. The first job I started in IT industry was in Sutherland Global Services as a BPO executive. So the managing director of that company, he was addressing at least more than 2,000 executives. One of the and I left. I mean, I was not the way I was studying everything. I was not meant for that BPO job, but it was a campus selection. I just went there. उन्होंने एक ही बात बोला था. If you have a focus, and if you have a choice, you can make it big. So I'll tell my story in another video. वो सेंटेंस मुझे आज तक याद है, और जो मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, that's because of those two things: my choice, my focus, and my choice. And that's why I have been working in this IT industry for a longer time, and this company also. That's because of this. So Focus is one book you should not miss by Ulrys. Then coming next. So these are some of Harvard Business Review books and the biography of certain people. So the HBR's 10 must reads on innovation. This is HBR book. ये आपको एकेडमिक बुक के हिसाब से है, और इसमें से आप इसको फॉलो अप कर सकते हैं जब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्लास होता है आपको, आप इसको फॉलो कर सकते हैं. द सेम द डेफिनेटिव मैनेजमेंट आइडियाज़ ऑफ द ईयर फ्रॉम दिस इज़ 2018. वो HBR के सारे बुक्स जो होते हैं, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के जो बुक्स होते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से लिखा जाता है वो बुक्स को, और वो उनके यूनिवर्सिटी के होते हैं वो बुक्स. ये मैंने ख़रीदा था. Then there is another book on leadership. So these are certain books. Then there are HBR books on decision making. I have other HBR books on marketing and sales also. So decision making. These are 4 books from HBR, Harvard Business Review. So normally you the people, you just always buy these books. Coming up next is Jugaad.
ये तो वो किताब है सर, वो कहते हैं ना कि जुगाड़ कर लो, बट ये जुगाड़ वो जुगाड़ नहीं है, इट्स ऑल अबाउट इनोवेशन. सो ये हमारे इंडियन ऑथर्स के हैं, एंड वन ऑफ द वेरी नाइस बुक आई हैव सीन हाउ इन इंडिया बिजनेस, जो बिजनेस करने के लिए निकलते हैं, कैसे वो सब इनोवेटिव माइंड्स या फिर जुगाड़ू माइंड से ये सब करते हैं और सक्सेसफुल होते हैं. ये सब इसमें लिखा गया है सब कुछ. Next is Richard Koch about Pareto principle, 80-20. How you can achieve 80% of your, business by following the 20%, working on the 20% one. So even in this 80-20 principle, I use, I've heard a motivational video on marathon running. So जब हम मैराथन दौड़ते हैं ना, so 80% जो है वो बीत जाता है. वो जो लास्ट के 20% रह जाता है जो डिस्टेंस, उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए ना बहुत मुश्किल होता है. उस वक्त मैं तो कुछ म्यूज़िक यूज़ करता हूँ, गाना सुनता हूँ जो मुझे मोटिवेट करता है थोड़ा आगे बढ़ने के लिए. सो कहते हैं कि जो 20% जो है उसको आप शेर जैसे शिकार करता है, पूरी ताकत को लगाकर शेर शिकार करता है, पूरी ताकत को आप लगा दो 20% के ऊपर. सो 20% अगर आप काम करके 80% अचीव कर सकते हो, दैट्स ऑल अबाउट 80-20 प्रिंसिपल. द सीक्रेट ऑफ अचीविंग मोर विथ लेस, कम काम करके ज़्यादा अचीवमेंट करना. इसी से कैसे होता है? देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड प्रिंसिपल्स. इफ़ यू फॉलो दोज प्रिंसिपल्स तो थोड़े समय में ज़्यादा हासिल करना इसी से सीखता है वो. सो दिस इज़ ए गुड बुक फॉर मैनेजमेंट स्टूडेंट्स. Gary Keller book, The One Thing. ये किताब आपको ये बताता है कि achieve better results in less time, वो तो ठीक है. Dial down the stress, revive your energy, stay on track, master what matters to you. One thing आपको ये बताता है, हम लोग कभी कभी है ना अपने सर के ऊपर बोझ ले लेते हैं, मल्टीपल वर्क. मैंने जैसे आप लोगों को दिया मल्टीटास्कर पैंट्स, और मेरे व्यूज़ बहुत कम मिल रहे हैं, बट मैं क्यों दिया हूँ? आई एम नॉट हियर इन द यूट्यूब चैनल just to make myself renowned or something like that. I want to contribute something for the society. I want to contribute something to the students of management, students, the people who are preparing for running, for fitness, all those things. So that is one of the reasons I have given multitasker paths. So even if the students who are preparing for to be a professor or teacher in schools and colleges and MBA or management schools, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को थोड़ा टिप्स देने के लिए रखा हूँ. मैं इतना भी उस लेवल का नहीं हूँ, बट स्टेप बाय स्टेप जो मैं आज तक आया हूँ. सो ये वही चीज़ होता है कि आप इन सारी जो किताबें हैं, सो ये वन थिंग जो किताब है ये बताता है कि मल्टीपल चीज़ आप करने से अच्छा फोकस ऑन वन थिंग और उसको कंप्लीट करो, और उसके बाद फिर दूसरा काम एक्सेप्ट करो. तो कभी कभी मैं आपको ये डिपेंड करता है अपने ऊपर. जैसे कि मैं 3 किस्म का किताब पढ़ता हूँ. एक स्पिरिचुअल बुक पढ़ता हूँ, स्पिरिचुअल बुक से मुझे डिफरेंट वोकाबुलरी मिलता है. देन मैं एक इकोनॉमिक्स बुक पढ़ता हूँ, एक मोटिवेशनल बुक पढ़ता हूँ. इसमें डिफरेंट और बोर नहीं होता है मुझे, क्योंकि स्पिरिचुअल बुक्स की जो है वो अलग कंसेप्ट होता है. सो कभी आप सवेरे या शाम को रात को सोने से पहले पढ़ लो. मोटिवेशनल जो होता है जब आप बोर हो जाते हो ना, तो कभी उसको देख लो, थोड़ा मोटिवेशन आता है उसमें. इकोनॉमिक्स एक नॉलेज होता है. मैं इकोनॉमिक्स के ऊपर और एक अलग निकालूंगा सब कुछ बुक्स जो है मेरे पास काफ़ी जो है वो बात करूँगा. सो मैं मल्टीपल चीज़ करता हूँ, बट वो ये कहते हैं कि आप एक पे फोकस करो और एक बुक को कंप्लीट करो, उसके बाद दूसरा बुक को पढ़ो. ऐसे ही टास्क के बारे में
It's all about one thing. It's about task. Then um, Marcus Buckingham again. Discover yourself. Discover your strength. How to develop your talents and those to people to manage. इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से कुछ पॉइंट्स लिखा गया है, कुछ सूत्र बताया गया है. अगर आप इसको फॉलो अप करते हैं सो एटलीस्ट आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है, एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए, ये जो 80-20 प्रिंसिपल आपको मैंने बताया ना, आप जिसमें आपकी अच्छाई है, जिसमें आपके स्ट्रेंथ है, आप उसी के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए. सो मेरे बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मेरा जो स्ट्रेंथ था, मल्टीपल आई एम वर्किंग इन ए डेटा स्टोरेज टेक्नोलॉजी इन डेटा सेंटर्स, सो डेटा स्टोरेज टेक्नोलॉजी. बट मैं उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें. उनमें से मेरी जो स्ट्रेंथ थी, जिसके ऊपर मुझे 2 डिस्टिंग्विश्ड सर्टिफिकेशन मेरे साथ हैं, मैं उसी के ऊपर फोकस किया. एंड बिकॉज ऑफ दैट I have a name in the industry today in that technology. Unfortunately, I will not be able to disclose it. I mean, not disclose. There are some kind of compliance with my, HR policy. So, in fact, all my friends, अभी जो उन्होंने ये सब वीडियो देखे हैं, वो मुझे बोले कि हेमंत तू क्या कर रहा है? तुझे जो करना चाहिए वो तो तू कर ही नहीं रहा है. They were expecting something that I should come to the YouTube channel and create my own, about the product, about the technology, about the design, about the troubleshooting, all those things. But I cannot do all those things because I have, some HR policy. I'm just gathering all those things. So the day will come. You will find hundreds of videos of that, but that is specific to this industry people. That's not for the common people. Specific industry people will come to that to look at the video because very few people are in India and on that technology, and I'm one of them. And I work with all my partners and companies, customers, everywhere. So ये वही कहता है जो आपकी स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ के ऊपर आप पूरी तरह से उसको डिस्कवर करो, आपका स्ट्रेंथ को, और उसी के ऊपर आप काम करो. सो 80-20 प्रिंसिपल में वही है, आपकी जो स्ट्रेंथ है उसी स्ट्रेंथ के ऊपर आप अपने 80% का टाइम लगाइए. जो 20% है जिसमें आप वीक है, उसी के ऊपर 20% टाइम लगाइए, उसको डेवलप कीजिए. बट फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ. दिस वन इज हाउ टू डिस्कवर योर स्ट्रेंथ एंड देन फोकस ऑन दैट to achieve success. उसके बाद मेरे पास जो बुक है एक Crooked Minds. So you know what is written here? Are crooked minds more innovative? It seems clear that innovation requires crooked thinking, that's thought processes that deviate from the straight and conventionally defined mode. After all, an innovation means something different from what exists. आप अपनी ये जो crooked mind जो मन से आप innovation कर सकते हैं, ये किताब बताता है आपको. जो normally होता है ना, जो thinking process होता है, MBA एक ऐसी चीज़ है जो आपके थिंकिंग प्रोसेस को चेंज कर देता है. दैट्स वन ऑफ द रीजन पीपल डू MBA, एंड आई हैव गॉट बेनिफिट फ्रॉम दैट. आई कैन स्टिल टेल, इवन if you're an engineer, if you're an economist, if you're a doctor, medical officer, scientist, anyway, by doing an MBA, you can, it's a multidisciplinary study. You can discipline yourself in terms of management, in terms of finance, in terms of behavior, human resource kind of thing. It changes your thinking process. Many people, left the job and started their startups, all these things. It's because of this MBA. So this is Crooked Minds is one of the book. It tells you that how to do the innovation. Then finally, I have Steve Jobs story by Walter Isaacson.
सो जैसे मैंने 20th सेंचुरी के सीईओ हम जैक वेल्च को मानते हैं, सो 21st सेंचुरी के सीईओ ये हैं साहब, जिन्होंने हमें एप्पल, आईफोन, आईपैड, मैक, इन दिस बुक उन्होंने ये लिखा गया है कितनी बार वो फेल हुए हैं, उनको निकाल दिया गया है कंपनी से, कितनी बार वो फेल हुए हैं, और आज अगर एप्पल पूरी दुनिया में, एप्पल का ब्रांड का नाम है, और इन्होंने वो एप्पल का जो साइन है ना, थोड़ा कटिंग जो है, इन्हीं के टाइम से वो दिया गया था। यू शुड रीड द बुक स्टीव जॉब्स। अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव, आई मीन बिल गेट्स साहब की बुक नहीं है मेरे पास, बट बिल गेट्स साहब खुद ही इतने सारे बुक्स पढ़ते हैं ना, एक हफ्ते में 2 बुक्स पढ़ डालते हैं वो। सो दिस इज़ वन, एंड Alibaba by Duncan Clerk, and it's all about Jack Ma. How an English teacher, और वो अलीबाबा जो है उनका उनका नाम उन्होंने अपनी कंपनी का नाम क्यों दिया, यूएस में एक रेस्टोरेंट में खाते खाते उन्होंने अलीबाबा 40 चोर की जो एक देखा एक पिक्चर, वो देखते देखते अलीबाबा नाम रख लिया उन्होंने। सो इसमें ये दिखाया गया है कि चाइना में ए सक्सेसफुल जो आई थिंक एस रिचेस्ट पर्सन अभी मिस्टर मुकेश अंबानी है, उसके बाद इन्हीं का नाम आता है, और मिस्टर मुकेश अंबानी के जो फादर हैं धीरूभाई अंबानी साहब की एक किताब है पॉलिस्टर प्रिंस करके, वो किताब थोड़ा सा मिलता नहीं है आजकल, पर कभी अगर कभी मिल गया आप लोग उसको पढ़ेंगे ना, वो फिर दिखाया गया है कि धीरूभाई अंबानी साहब कहाँ से कहाँ तक पहुँचे, कैसे से ऐसे ही जैक मा कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। इट्स ऑल अबाउट अलीबाबा। ओके, देन I think that's all from my side. It's a long video. Please be patient and have a look. और आप इसको भगा भगा भी देख सकते हैं जो बुक्स मैंने दिया है। Next time I'll come with marketing, finance, economics, environmental science. Then I have other books on, yes, but those are academic books. For the students, but anyway, if I'll get some time, and yes, I have certain books on communication skills, public speaking, communication skills, how to make friends, how to talk to a friend, how to make friends in the society kind of thing. All these things I have, but those are 4 to 5, so that will be a short video. Please be patient and have a look towards this video. Thank you for watching these. Namaste.